Good morning, students. So today we are going to continue with chapter 1, and the topic which we will be discussing today will be insectivorous plants. But before we take up this topic, let me take it from the place where we had left yesterday. I was talking about the parasitic animals and I gave some examples of it. One was lice, and second was the worms which are found inside the humans, like tapeworm. In your book there are other examples also. For example, they talk of mosquitoes. Mosquitoes are also parasites. Bed bugs, जिसको हम खटमल भी बोलते हैं, that is again a parasite. And leeches, जिसको हिंदी में जोंक बोलते हैं, ये भी एक animal parasite है. Now if you look at this, for example, if you look at leeches, they feed on the blood of the animals. Same is with bed bugs. जो खटमल होते हैं, they also suck the blood. So all these are the good examples of parasite. I hope you will now have a better understanding of parasites and the examples both from the parasitic plant and the parasites which are animals. Now we'll continue with our next topic of insectivorous plant. Okay, so now we are going to discuss about the insectivorous plant. Now हमने थोड़ा बहुत insectivorous plants के बारे में पढ़ा है, but today I am going to just focus on the description given in your book. Now what does your book say about this insectivorous plant? It says, in the insectivorous plant, the pitcher-like structure is modified part of the leaf. तो ये जो सामने आप एक pitcher plant का structure देख रहे हैं, इसमें जो पिक्चर है, पिक्चर यानी कि PITCHER, इसको PICTURE नहीं करना है. तो जो पिक्चर है ये बेसिकली एक लीफ का मॉडिफिकेशन है. अगर आपको याद होगा, कैक्टस में जो स्पाइन्स हैं वो क्या है? मॉडिफाइड लीव्स हैं. उसी तरह से इन इंसेक्टिवोरस प्लांट लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू दिस पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर, राइट? Then it says the apex of the leaf forms a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Now ये pitcher तो है, लेकिन इसका जो ऊपर की जो ओपनिंग है उसको खुलना और बंद भी तो होना है. Now that is done by the lid of the pitcher. और जो lid है ये, वो भी लीफ का जो apex structure होता है. apex मतलब कि लीफ का जो टॉप पॉइंट होता है. एपेक्स का मतलब द टॉप पॉइंट. तो लीफ का जो टॉप पॉइंट होता है, इट गेट्स मॉडिफाइड इनटू द लिड. यानी कि एक लीफ नॉट ओनली मॉडिफाइज इनटू द पिक्चर स्ट्रक्चर ऑफ द पिक्चर प्लांट, इवन द टॉप पार्ट विच इज एक्चुअली द एपेक्स ऑफ द लीफ गेट्स मॉडिफाइड इनटू द लिड. तो एक ही पत्ता गेट्स मॉडिफाइड इनटू द होल पिक्चर along with the lid. I think I'm making this clear to you. Then it says inside the pitcher there are hair-like structures which are directed downwards. और वो भी बोलता है कि if you go inside the pitcher you will find hair-like outgrowths. अंदर बहुत सारे hair-like structures रहते हैं और वो किस तरह पॉइंट करते हैं? पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स. सो और इसको समझना भी काफ़ी ईजी है, क्योंकि जब कोई इंसेक्ट enters the pitcher, it is easy for that insect to go inside. और प्लांट भी यही चाहता है कि कोई इंसेक्ट अगर आया तो आराम से नीचे चले जाए या फिसल जाए. इट इज़ डिफिकल्ट फॉर द इंसेक्ट टू कम बैक. व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिक्चर, द लिड क्लोजेस एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट्स गेट एंटेंगल्ड इनटू द हेयर. अब क्या होता है कि once the insect enters that thing and it is moving through the hair, the lid gets an information कि कीड़ा अंदर आ चुका है. Now you should get closed. और कुछ टाइम के बाद out of suffocation or due to the other reason the insect dies, and then the digestive juices inside the pitcher plant will digest the insect and absorb the nutrients from it, basically for the nitrogenous compound it is taking and killing the insect. This is all which is there in your book. I hope you have understood what is given in your book, and if anyone asks you any questions related to this, you will be in a position to answer it. इसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन और पूछा है, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट insectivorous plant have chlorophyll in them and therefore they can produce their own food. Then why do they require killing an insect to get nutrients from it?
I think we have discussed on this topic many a times before, and if some of the students still have some doubts on it, or they have not understood it clearly, they can post me a message and we can have a talk on that. So this ends our discussion on the insectivorous plant.